हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे ग्लिटरी पिंक स्मोकी आइज़ का मेकअप, जो कि इट्स वेरी इजी, आप आराम से कौन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज और प्राइम पहले कर लिया हुआ था। ठीक है, मैं इधर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ फेस पे। फाउंडेशन को ब्लेंड आउट करने के बाद मैं करूँगी अपनी आइज़ को प्राइम। हम पहले करेंगे आइज़ मेकअप। उसको करने के बाद, प्राइम करने के बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर के बाद को पाउडर से सेट करके और इसके बाद हम जाएंगे मेकअप की। मेकअप के लिए मैं मोरफे की पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से जो सारे पिंक की फैमिली के हैं ना, वो कर भी पिंक करना है हमने। तो सबसे पहले हमने करना है कि जो ब्राइट पिंक है वो लेना है, नॉट द डार्क वन, ब्राइट वन। ठीक है, जो ब्राइट होगा वो हमने क्रीज पे लगाना है। ठीक है, और एक शेप क्रिएट कर लेनी है। क्रीज को अच्छे से आपने सुकून से ही काम करना है, ज़्यादा तेज़ी में नहीं करना, आराम से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, पर्पलिश एक कलर लूँगी। ठीक है, और उसको भी ब्लेंड आउट कर दूँगी इसके साथ, ताकि एक स्मोकी सा इफ़ेक्ट आ जाए। ठीक है, दरमियान में हम करेंगे करने के बाद अच्छे से हम करेंगे इसको कंसीलर से मैं इसकी शेप करूँगी जिस तरह हॉलो आइज़ होती है। ठीक है, ऐसे करना है। कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर के बाद मैं हुदा ब्यूटी की पैलेट से एक पिंक शेड ले रही हूँ जो थोड़ा बहुत शिमरी है। ठीक है, थोड़ा सा शिमरी है, वो लूँगी और उसको अपने आईलिड के बिल्कुल सेंटर पे लगा लूँगी, जहाँ से मैंने कंसील आउट किया हुआ है। कंसील आउट करने के बाद
मैं एक ग्लिटर लूँगी, ठीक है। ये मॉर्फे की मैं ले रही हूँ, ये दिस इज़ नॉट ओरिजिनल, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, दिस इज़ नॉट कि आपने ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली लेनी है, आप कोई भी ले सकते हैं। पहले तो मैं उसको लगाऊंगी और ग्लिटर्स को से उस पर लगा दूँगी। उसके बाद मैं मिस रोज़ का आईलाइनर लूँगी और एक पिंक आईलाइनर बना दूँगी अच्छे से। और ब्रशेस पुट ऑन कर ली, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गई आई लुक। फिर मैं कल हूँ जो कि रिवाज यूके का है, सेक्सी कर्व मस्कारा, ठीक है। मैं ये लगा के लिपी है वो ले रही हूँ और उसको, वो भी थोड़ी पीची पिंक शेड में है, और उसको अपनी वाटर लाइन पे लगा दूँगी। वाटर लाइन पे लगाने के बाद मस्कारा लगा रही हूँ। और उसके बाद हम कंसीलर लगा रही हूँ, ठीक है। कंसीलर लगाने के बाद उसको ब्लेंड आउट करने के बाद मैं सेट कर लूँगी। मैं इधर बेकिंग कर रही हूँ, यू कैन सेट इट विद योर कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं मिस रोज़ का पाउडर लेके बेकिंग कर रही हूँ। मैंने अपने एरियाज़ पे लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर की पैलेट से कंट्रोल कलर लूँगी और अपने फेस को पूरा कंट्रोल आउट कर लूँगी। कंट्रोल आउट करने के बाद मैं पाउडर को एज यू कैन सी कि मैं पाउडर से सारा रिमूव कर रही हूँ, ब्रश से सारा रिमूव कर दिया है। उसके बाद मैं का ब्लश ऑन लूँगी और ब्लश लगा लूँगी अपने, और हाईलाइटिंग
ब्लश पैलेट है उसमें से एक जो हाइलाइटर शेड है वो ले रही हूँ और दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाइलाइटर। ठीक है, हाइलाइटर लगाने के बाद यू कैन सी कितनी सटल और कितनी प्यारी सी लुक आ रही है। ठीक है, ग्लिटर से। सो या ये एनेस्थेसिया बेवरली हिल्स की है और लगाने के this is the complete look and I hope you like this look and please comment down कि आपको ये लुक कैसी लगी है। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।